नमस्ते हमारे सारे दर्शकों को और निवेशक को। आप में से कई लोग यूको बैंक अकाउंट होल्डर्स भी होंगे, तो ये एक स्पेशल वेबिनार है, स्पेशल सेशन है आपके लिए, मोस्ट अवेटेड और भारत के सबसे बड़े और चर्चित आईपीओ के बारे में। जी हाँ, ऑफ कोर्स हम LIC IPO के बारे में बात कर रहे हैं, जो देश का लार्जेस्ट इंश्योरर भी है। और इस आईपीओ के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं विमलेश पांडे जी, जो है AGM यूको बैंक से। नमस्ते विमलेश जी। नमस्ते शिवानी, नमस्ते नीलेश, नैनेश और नैनेश ऑफ कोर्स फिस्डम से हमारे मार्केट एक्सपर्ट नैनेश भी हमारे साथ मौजूद है। तो आगे जाने से पहले, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि LIC IPO इज ऑलरेडी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन सिंस May 4 और May 9 तक इन्वेस्टर्स के लिए इस IPO में अप्लाई या सब्सक्राइब करने के लिए इशू खुला है। एम्प्लॉय और पॉलिसी होल्डर कोटा 3 to 4 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्शन भी अभी फुली सब्सक्राइब्ड है 1.3 टाइम्स। लेकिन 2 दिन अभी बाकी है, 2 more days for you to apply and hold the chance to become a shareholder of LIC। तो इस IPO के जरिए LIC जो एक पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ओन कंपनी है, वो अभी 3.5% स्टेक डाइल्यूट करेंगे या पब्लिक को शेयर्स भेजेंगे टू रेज अबाउट 20,500 crore रुपीज फ्रॉम द मार्केट। और इस IPO का प्राइस बैंड जैसे हम जानते हैं 902 रुपीज टू 940 रुपीज पर शेयर है। और जब हम प्राइस बैंड और बिडिंग के बारे में बात करें तो LIC IPO में कंपनी ने ना सिर्फ LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए बल्कि अपने एम्प्लॉइज और रिटेल इन्वेस्टर्स को भी डिस्काउंट ऑफर किया है। तो इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। और ऑफ कोर्स अब आप यूको बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप जो यूको M बैंकिंग प्लस है, उसके जरिए भी आसानी से LIC IPO में निवेश कर सकते हैं। हम उसके लिंक यहाँ कमेंट सेक्शन भी में शेयर करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आगे डाल देंगे। तो इतना बोल के नैनेश, आपके लिए पहला सवाल, ये LIC IPO को लेकर मार्केट में बहुत एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन बना रखा है नैनेश, और अब फाइनली ऑफ कोर्स बिडिंग चालू है, काफी डिमांड भी देखने को मिल रहा है हमें। तो इस लेवल ऑफ एक्साइटमेंट का वजह क्या है? क्या अभी IPO मार्केट में लाने का अच्छा टाइम है, एंड हैज इट बीन वर्थ द वेट फॉर इन्वेस्टर्स? या शिवानी, थैंक यू। सो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो 3.5% स्टेक LIC का मार्केट में बेच गए हैं। 3.5% ऑफ द एंटायर कंपनी इज एक्चुअली अबाउट 20,500 crores। तो उसमें से 35% जो है वो रिटेल कोटा है। दैट मीन्स अबाउट 6,500 crores will be raised from retail. Okay, and it is very heartening to see that the retail applications have reached the highest ever in the stock market. I mean, 20,000 crores. This is the first time the stock market is raising so much money, be it for a public or a private sector company. Very excited to see where this IPO takes us. बहुत इंटरेस्ट था। पहले LIC का IPO अनाउंस किया गया था, मार्केट कंडीशंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से गवर्नमेंट ने वो इशू पुश किया। अभी जाके आप देख सकते हो कि फाइनली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम IPO लेके आ रहे हैं। पहले 5% स्टेक बेचने जा रहे थे, अब जाके 3.5% मार्केट में बाहर दे रहे हैं। प्लस दे हैव सेड दैट गोइंग अहेड दे विल रिड्यूस फर्दर स्टेक। सो गोइंग अहेड यू विल सी मोर एक्साइटमेंट where people will get additional shares of LIC. So for the start, 3.5% का dilution हो रहा है। It's exciting to see the participation, जैसे कि आपने बोला कि it's already getting oversubscribed. 3 quotas थे जो कि retail, employee और पॉलिसी होल्डर का कोटा जो है वो ऑलमोस्ट 4.5% ओवर सब्सक्राइब, 4.5 times ओवर सब्सक्राइब हो गया है। एम्प्लॉइज का 3.5 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया है। जो रिटेल है वो 1.3 times ओवर सब्सक्राइब हो गया है। मतलब आप देख सकते हो कि कितना एक्साइटमेंट है अमॉन्ग्स्ट द पीपल टू गिव मनी टू LIC एंड बिकम शेयर होल्डर्स। बिल्कुल नैनेश, आपने सही कहा। LIC जैसी कंपनी जो एक बहुत बड़ा लेगेसी कंपनी है, सबसे बड़ी इंश्योरर है, और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में हम देखें तो भी मतलब काफी बड़ा एसेट्स होल्ड करते हैं, अबाउट 36 लाख
crore rupees. तो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे. नैनेश जी, जो सवाल आपके लिए, what has been the response among UCO Bank account holders and customers to this LIC IPO so far? क्योंकि UCO Bank in partnership with Fisdom very recently launched broking and trading services through which you have also been able to open demat accounts and bid and apply for big IPOs such as LIC. तो UCO Bank account holders और employees staff के बीच में क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको? थैंक यू शिवानी. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग मैं अपने सभी दर्शकों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं. और आज के समय का जो सबसे चर्चित विषय है, मीन्स द टॉक ऑफ द टाउन इज LIC IPO. सिंस 4th of May एवरीबडी इज टॉकिंग एवरीवेयर. हर कोई अच्छे एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, कैसा होगा, क्या डिस्काउंटिंग होगी कि नहीं होगी, हमारी प्राइसिंग कहाँ जाएगी. डिस्काउंट्स भी काफ़ी मिल रहे हैं, जैसा कि अभी नैनेश जी ने बताया कि 60 रुपीज़ का डिस्काउंट है पॉलिसी होल्डर्स के लिए. इवन रिटेल कस्टमर्स को भी 45 रुपीज़ का मिला है. ओवर सब्सक्रिप्शन ये कहता है कि किस तरीके से इसे हाथों हाथ लिया गया है. तो अगर हम कुल मिलाकर के बातें करें तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स है. हो भी क्यों ना, LIC एक ऐसा वाइट एलिफेंट है कि जैसा आपने अभी एक स्टेट्स दिया था कि जहाँ तक मुझे पता है LIC एक ऐसा ब्रांड है जो टोटल EMU से भी बड़ा हुआ है. मतलब उसकी जो मार्केट साइज है, कैप है, वो सबसे बड़ी है, EMU से भी बड़ी है. LIC कई मायनों में मार्केट में ना रहते हुए भी है, उसके इन्वेस्टमेंट कई बड़ी कंपनीज में है. ऑलमोस्ट 300 बिग कंपनीज में उसके इन्वेस्टमेंट है. तो सबने यूको बैंक में भी उसे हाथों हाथ लिया है. हमने काफ़ी इसको लेके पब्लिसिटी की, पॉपुलरिटीज़ की. इवन हमारे स्टाफ में हमारे कस्टमर्स सब एक्साइटेड हैं. और एक अच्छी चीज़ इस IPO को लेकर के ये भी हुई कि 85% लोग अब डिजिटल की तरफ आ चुके हैं. जो पहले एक हुआ करता था, अगर हम कुछ दिन पहले जाएं, अगर IPO वगैरह की बात करें 1 डिकेड पहले, तो वहाँ पे फिजिकल वेरिएंस का काफ़ी इम्पैक्ट हुआ करता था. अब जैसे कि इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री, नाउ इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ डिजिटल बेस्ड बैंकिंग और ट्रांजैक्शन कंट्री, जहाँ पे लगभग अब हर कोई एक डिजिटल का एक सहारा लेता है. फिजिकल कैश मूवमेंट्स वगैरह काफ़ी कम हो चुके हैं. वही से LIC के IPO ने साबित भी कर दिया. जहाँ तक हमारे बैंक की स्टैटिस्टिक्स की बात है तो 85% अब जो हमारे IPO हैं, मोर देन 85% इनफैक्ट, वो डिजिटल मीडियम से हुए, चाहे वो हमारे मोबाइल बैंकिंग से हुए हों, UPI से हुए हों, और ब्रांच के थ्रू जो फिजिकल फॉर्म या के तहत वो काफ़ी कम हो चुके हैं. एंड वी एक्सपेक्ट कि जब तक ये LIC IPO खत्म होगा, हम 90% के ऊपर डिजिटली इसे मतलब प्रोसेस किए होंगे. अब जैसा कि आपने कहा कि फिस्डम के साथ अभी हमने कुछ दिन पहले इन द मंथ ऑफ मार्च हमने अपना एक पार्टनरशिप चालू किया था. उसके पहले भी हमारे मोबाइल बैंकिंग में हम आसबा की फैसिलिटी दिया करते थे. तो दोनों चैनल को, मतलब एक हमारे मोबाइल बैंकिंग के तहत भी और जो फिस्डम के तहत है, दोनों में वी आर गेटिंग अ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस फिस्डम पार्टनरशिप इज इफ यू डोंट हैव अ डीमैट, मान लीजिए अभी तक आपने प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में आपका कोई प्रेजेंस ही नहीं है, और LIC ने एक ऐसा बज क्रिएट कर दिया कि एवरीबडी इज लुकिंग, मैं ना पीछे छूट जाऊं, मुझे भी इसमें अप्लाई करना है. तो आपको कुछ नहीं करना है. यूको बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, सिंपली जाइए, उसके अंदर में आप वेल्थ मैनेजमेंट में जाइए और इंस्टेंटली आप CDCL में अपना डीमेट खोल सकते हैं, ट्रेडिंग खोल सकते हैं, और इमीडिएटली आप IPO में अप्लाई कर सकते हैं. और द ब्यूटी इज कि इट्स एब्सोल्युटली फ्री. आपको कोई ओपनिंग चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है डीमेट में. एज ऑफ नाउ इट्स एब्सोल्युटली फ्री. आफ्टर एन ईयर देयर विल बी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, बट एज ऑफ नाउ इट इज एब्सोल्युटली फ्री. सो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप आ सकते हैं. इट्स अ मैटर ऑफ मिनट्स ओनली कि जहां पे आके आप इंस्टेंटली डीमेट प्लस ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करके आप तुरंत IPO में अप्लाई कर सकते हैं. बिल्कुल विमलेश जी, जैसे आपने कहा एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल. जैसे आपने बोला कि 85% ऑफ योर बैंकिंग कस्टमर्स आर मूविंग टुवर्ड्स दिस डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड प्लेटफॉर्म. तो यूको M बैंकिंग प्लस ऑफ कोर्स इज अ वेरी कन्वीनियंट वे
of opening your demat account and also applying for the LIC IPO. So definitely a very simple and convenient platform to start your investment journey, and of course also hold a chance to become an LIC shareholder. तो ये IPO कैसे खरीदा जाए, ये सारे चीज के चर्चा भी हम आगे जाके करेंगे. पहले देखते हैं कंपनी के बारे में. नैनेश, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स एंड द कंपनी स्ट्रेंथ्स, प्योर कंपैरिजन and all of that. तो अगर कंसिडर करते हैं करंट स्टेट ऑफ LIC, नैनेश, लेगेसी कंपनी है, 65-year-old कंपनी, ह्यूज पैन इंडिया स्प्रेड एंड एजेंट नेटवर्क, लेकिन कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, न्यूअर, यंगर और मोर इंश्योरेंस सेक्टर में. सो हाउ वुड यू लुक एट इट्स बिजनेस एज इट स्टैंड्स टुडे? Sure. So, Shivani, thank you. I'd like to say that LIC started in 1956. 1956 में जो कि LIC को चालू किया गया था. अभी आप उस टाइम पे ऑलमोस्ट आई थिंक 245 कंपनीज को एक साथ मिला के ये जो जायंट है उसको बनाया गया था. साल 2000 तक वो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस था, जो कि इंश्योरेंस में LIC was the only company which was selling insurance policies. उनका जो रूरल रीच है वो सबसे हाईएस्ट है. आज के टाइम पे अगर आप देखो तो 91% डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया आर केटर्ड बाय LIC. तो रूरल रीच है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है LIC के लिए, जो कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं. उनका जब रेवेन्यू स्टेटमेंट्स देखो तो 64% of the entire business comes from rural India. तो वो भारत से पॉलिसीज बेच रहा है और भारत से प्रीमियम कमा रहा है. However, if you go out to other private companies combined, I mean, you would really see that the second largest insurer is only 8% in terms of rural reach. So rural reach में सिर्फ 8% business second largest insurance के पास है. मतलब आप समझ सकते हो कि what is the kind of reach that LIC has. The other big plus point जो बोलते हैं LIC के पास है उनका एजेंट नेटवर्क. 13.5 लाख एजेंट्स है. So on today's day you can say that 55% of the total agents in India are LIC, and they're selling LIC policies. मतलब every second agent who's selling insurance is an LIC agent. और one more big factor is that LIC believes that the agent network is the strength for LIC. When you talk about insurance, and especially when you speak about life insurance, the very important factor here is trust. और trust जो है वो LIC के पास है. तो पर्सन टू पर्सन सेल्स में वो बिलीव करते हैं पर्सनलाइज टच और ट्रस्ट रहता है, जिसपे वो अपना पूरा बिजनेस मॉडल चला रहा है. तो जो एजेंट नेटवर्क है, ये एजेंट नेटवर्क इज द नेटवर्क व्हिच इज ब्रिंगिंग द बिजनेस टू LIC ऑन टुडेज डे. Okay, so that is a very, very big advantage that LIC has on today's date. One other plus point is the payout that LIC does to its agents. The payouts are one of the biggest in the market today. So it's one of the biggest payouts in the market today. इसके वजह से आप बोल सकते हो कि business in compared to the other players is currently doing very, very strong. The one point that I'd like to mention here is the government has actually given LIC a DSII status. And what is a DSII status? Is a domestic systematically important insurer, which means that this company possibly cannot go bankrupt. Okay, there is sovereign guarantee on this company. So very important point. This is how important LIC is to the government, and that's why if you compare it to its peers, current valuation pay, I think it's about 1.1 time its embedded value, where if you compare it to the peers, they are all about 2.5 times the value. So considering all of that, I would say that the valuation is very, very attractive, and I think the business is here to survive. बिल्कुल नैनेश, you've highlighted most of the very key strengths and plus points of LIC as a business. वो एक sovereign company है, it cannot go bankrupt, it's a big investor in the market as well, and of course the AUM that it holds, the asset under management that it holds, 39.5 lakh crore rupees,
huge market share as well. लेकिन अगर हम also on the flip side risks को देखें और potential downsides to the business जब analyze करते हैं LIC, what should one consider? क्योंकि जैसे हमने कहा newer private sector players हैं जो better service offer कर सकते हैं अभी insurance sector में, because now everything boils down to customer service. तो इस तौर पे compare करें तो आप क्या कैसे चर्चा करोगे? So when you talk about risk, okay, especially when it comes to LIC, there are a few factors that needs to be taken into consideration. One big factor is that it is government owned. Okay, so you're seeing that a lot of private insurers, as compared to LIC, are trying to penetrate the market through online media. जो उनके पॉलिसीज है वो ऑनलाइन माध्यम से ज्यादा बिकते हैं. LIC जो कि अभी ऑनलाइन प्रेजेंस में आ गया है, पर जितना शेयर प्राइवेट सेक्टर का है उतना LIC का नहीं है. दैट्स एक रिस्क जो है वो है. दूसरा एक बड़ी चीज जो है वो साल अगर आप अब साल 2015 में देखें तो LIC का जो मार्केट शेयर था वो था 75%. 75% of the entire industry was LIC. That means अगर आप 100 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो, 75 रुपीज जा रहा है LIC को. इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है. On today's day, the same premium is about 64. So आप देख सकते हो कि वो मार्केट शेयर ईयर ऑन ईयर लूज कर रहा है. दो इट इज द बिगेस्ट मार्केट शेयर, पर ईयर ऑन ईयर वो नीचे आ रहा है. वो एक पॉइंट हो सकता है which is a risk to LIC, which is losing market share. The other point I'd like to make is LIC का जो आप बोल सकते हो LIC claim settlement ratio almost private players के बराबर है. तो claim settlement ratio is still as standard as a private player, but जो कि प्रीमियम्स चार्ज करते हैं सेम पॉलिसी सेम कवरेज के लिए वो थोड़ा ज्यादा है as compared to private players. तो वहां जाके थोड़ा LIC में गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी एंटिटी बिजनेस उसमें कुछ इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि प्रीमियम्स आर हायर देन द प्राइवेट प्लेयर्स. और दूसरा एक बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है कि LIC इज फ्रॉम टाइम टू टाइम फोर्स्ड टू काइंड ऑफ बेल आउट कंपनीज, राइट. LIC इज फोर्स्ड टू समटाइम्स टेक स्टेक्स. जैसे कि हमने देखा था IDBI बैंक में LIC को 51% स्टेक गवर्नमेंट ने दिलवाया था, जैसे एक बेल आउट था. सो एट टाइम्स द गवर्नमेंट यूजेस दिस कैश फ्लो, जितना बड़ा कैश फ्लो प्रीमियम्स का आ रहा है इन द मार्केट्स टू बेल आउट कंपनी. सो फोर्सफुली वेदर वांटिंग और नॉट द बिजनेस हैज टू टेक अप रिस्क. सो दीज आर द रिस्क दैट आई फोरसी इन अ बिजनेस लाइक LIC. बिल्कुल नैनेश, साफ we've of course spoken about the risks and the strengths. Of course, from how we see it, there are a lot of strengths that could probably outweigh the risks, but it is of course pertinent to compare both risks and strengths before you invest in large IPOs. But of course, as we mentioned, LIC has global operations. It has managed to keep up with its peers and competition by going digital. It has a huge agent network, a large rural presence, global operations as well, and of course continue investors to consider both the strengths and the risks involved. अभी देखते हैं कि LIC IPO में अप्लाई कैसे करें और कैटेगराइजेशन कैसे हुआ है. जैसे हमने पहले बताया कि LIC has reserved 35% of the IPO for retail investors. That's a huge chunk. So let's talk about how one can apply through this. Nainesh, take us through the discounts offered for retail investors and policy holders. Sure. So LIC has given a very attractive discount to all its policy holders. जो भी LIC policy holder है उसको एक special 60 rupees discount per share मिला है. Means if you apply for 15 shares जो कि minimum lot size है, आपको 949 at the upper band पे 60 rupees discount मिलेगा. तो 60 into 15 मतलब आपको जो है वो टोटल 900 रुपीज का फायदा मिल रहा है LIC को LIC IPO अप्लाई करने के लिए. बट यू हैव टू बी अ पॉलिसी होल्डर टू अवेल ऑफ दिस डिस्काउंट. जो दूसरा डिस्काउंट हमने डिस्कस किया वो है कि देयर इज अ रिटेल डिस्काउंट प्लस एन एलिजिबल एम्प्लॉई डिस्काउंट.
LIC का as of today they have plus of 2 lakh employees, 2 lakh employees के ऊपर है, और these 2 lakh employees also have been given an additional discount of 45 rupees, which means that retail quota जो है, retail category में investors investing lesser than 2 lakh rupees, उनको एक 45 rupees discount दिया है, plus employees को 45 दिया है. So आप as an employee, if you are an LIC employee, you can apply for all the 3 quotas. You can apply in 2 lakh rupees in the retail quota, you can apply 2 lakh rupees in the employee quota, plus you can apply 2 lakh rupees in a policy holder quota. So this time it's different from the other IPOs. In the other IPOs, you can either apply for a retail quota or you can take a discount being an employee. Here in this case, you can do multiple applications. आप रिटेल में भी एक एप्लीकेशन डाल सकते हो जो कि 2 लाख वर्थ तक हो सकता है, और आप पॉलिसी होल्डर में भी एक एप्लीकेशन डाल सकते हो जहां पे आप 60 रुपीज डिस्काउंट ले सकते हो. तो ये जो स्टैंड लिया है LIC ने, बहुत ही अट्रैक्टिव है. सो एज अ इन्वेस्टर आई कैन कंफर्टेबली इन्वेस्ट 4 lakh rupees if I'm not an employee by taking benefit of the retail quota where I'm getting a 45 rupees discount per share and taking benefit of 60 rupees as a policy holder. So very exciting. Lot of people have done multiple applications and taken benefit of this discount that the government is giving. बिल्कुल, तो हम बोल रहे हैं कि मल्टीपल बिड्स भी कर सकते हैं अंडर दीज कैटेगरीज टू रियली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ अलॉटमेंट. और अभी मतलब दिस इज द 4th डे नैनेश सिंस द IPO हैज बीन ओपन. सो लेट्स टेक अ लुक एट द सब्सक्रिप्शन फिगर्स. वी हैव स्पोकन अबाउट दैट एट द आउटसेट. That just clearly gives us a sense of the investor interest and demand for LIC shares. All policy holder employee quota already been oversubscribed, retail quota also oversubscribed 1.3 times. So what are the odds of allotment? ऐसे नहीं है कि some people have these doubts कि already oversubscribed हो गया है, fully subscribed हो गया है, तो अभी आगे जाके शायद हमारे chances कम होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है IPO में. We have 2 more days for a chance to get shares of an LIC IPO. So what are the odds of allotment and how does one go ahead from here on? So allotment in IPOs in terms of oversubscription does not really mean that you will not get allotted. So it doesn't mean कि oversubscribe हो गया है तो आप apply ना कीजिए. Actually, a lot of interest comes in the IPO after the oversubscription because there is confidence amongst the retail कि ये IPO का demand है. अभी at the time of allotment, it could be a random allotment where you may or may not get shares irrespective of the time that you applied within the IPO boundaries. So here in this case, हमारे केस में 4th से लेके 9th तक का IPO open है, bids आप डाल सकते हो. So there is a chance कि जो जिसने 9th पे अप्लाई किया है उनको भी ना मिले. There is a chance जिसने 4th को अपना bid डाल दिया उनको भी ना मिले. So there is no certainty in terms of whether you will get allotment or not. But the interesting bit is, maximum interest comes in an IPO after it is oversubscribed, because that builds confidence amongst the retail that there is demand for the IPO. So irrespective आपने कब bid डाला है, there is a chance to get allotment for LIC under the various quotas. बिल्कुल, तो हम बोल रहे हैं कि देयर इज स्टिल अ चांस, 2 more days left. और विमलेश जी, अगर आप इस पे आ सकते हो कि हाउ डू यू अप्लाई फॉर द LIC IPO नाउ थ्रू UCO Banking प्लस, क्योंकि काफी सवाल आते हैं कि LIC IPO कैसे खरीदा जाए. And UCO Banking Plus, of course, is giving them a very simple and convenient platform to do so. So if you can take us through the journey of, how to open an account, apply for the IPO, what exactly will be the navigation for a UCO Bank account holder? Sure, Shwani. So Nanesh has beautifully told about all the risks associated with this IPO as well as what are the advantages one can look for. So after all, always as it is said, market is always based on the one's choice, how much risk an individual is going to take, and basis it they come to the market and they go for the investment. So when I talk about a UCO Bank is completely providing all the convenience what it can to support this IPO and to
make our customer feel an easy step within their fingertips without any hassle. They can conveniently apply to the IPO. For coming 2 to 3 minutes, I will take the journey and I will try to what you can say clarify the doubts if somebody is having, because I was going through the comment section also where few queries have also been put, so I will try to address all those things. First of all, UCO Bank as a bank has provided all its channel. Even if a customer is not a digital savvy or a tech savvy, for them also we have provided an opportunity or a channel. They can visit to our branch. Our branch officials will assist them, and they will on their behalf, basis on their declaration and their form application, they will submit the IPO. So that is a one way. But there are very few people, as I said, till date only less than 15% people have approached our physical form. More than 85 or 85% are going for a digital one. So still now there is a one aspect where the person can go to the branch and apply. For them, our branch officials across the country, UCO Bank is means equally distributed across the country. Its branches are there. You can approach them, and therein you can submit the application form and be a party for this LIC IPO. Now, if you don't want to go on a physical way, you want to make an application or a participation digitally, sitting at your own convenience, at your own terms and conditions, you can opt for UCO Bank's various channels. What are they? They are our internet banking channel and the mobile banking channel. So first I will cover the internet banking. Definitely, whenever you take any bank account nowadays, mostly you are covered with the mobile banking and internet banking facilities. So to go for an internet banking, you must have your user ID and password. You log into your internet banking, look for the ASPA menu, apply there, so give your transaction password, and that's enough. Your application has been submitted, your amount will be blocked, and you need not to do anything. Rest will be taken care by the system, and everything will be informed to you over the communication channels in form of SMS. You will get the SMS when you will apply for the ASBA, when the lien will be put in place, and even after that, when you will be allotted share, then also you will get a SMS. Once your lien is uplifted, then also you will get a SMS. Now comes to the best part of the UCO Bank, that is the UCO Bank mobile banking application. In my earlier webinars also, I have emphasized how UCO M banking application is class apart. When you go to its Play Store rating also, it says it is one of the leading mobile banking application in the BFSI sector. Being a public sector bank, we have committed ourselves to deliver to our customer in the form of mobile. As we know, everybody nowadays would like to have a banking or whatever the other things which comes into a day-to-day life in the mobile itself. And we have tried our best. Why not? That we give the banking itself in the mobile. And UCO M Banking Plus is one of the examples how a person can avoid these physical disruptions nowadays and prefer the digital world. So when you come to a UCO Mobile Banking Plus, again there we have given a lot of option. It's up to the customer. Customer is the king and he is having a choice. Once he logs into our mobile banking application, there also he can get a ASBA. He can apply through the ASBA. Then the next option, when suppose a customer is not at all in the stock market, it means he is neither having a demat account nor a broking account or either of the two. So that facility also has been provided to them. They can instantly open a demat there itself. So for that also we have taken care. We have provided both the NSDL and CDSL's demat accounts. So it depends upon the customer where he wants to go along. But when we talk about a partnership with Fisdom, we have taken a journey to a next level. So we have completely designed a bouquet called a wealth management in our mobile banking. If you click on our wealth management section, you will find that open an Insta trading account in CDSL, means instant demat plus trading account. In the NSDL, you won't get a demat account, trading account instantly. Only thing you will get a demat only. But when we talk about this partnership with Fisdom, you can instantly open a demat as well as trading account, and it is a matter of only a minute or two. You have to digitally do your KYC. How you do your KYC? You have to put up your Aadhaar number, your PAN number. You get an OTP. You have to put up your e-sign, that is in the form of a OTP itself.
and your demat and trading account is instantly activated. In few instances, at times customer becomes panic. When we say instantly, normally it happens instantly, but if suppose it's a non-working day or there is any technical glitch, it may take an half an hour, an hour time. That's all. So you need not to be panic. It's a matter, means at 95% it is a matter of time, it will be open instantly. At times 4 to 5% times, normally on Sundays or Saturdays, when there is a routine maintenance work and other things, it may take an hour or 2 hour time. That's all. So you can instantly open your trading account, your demat account with our partnership with Fisdom. Now, when we talk about this LIC IPO, there is a section called IPO. Simply go to the IPO. Now, as the Nanes has emphasized, what are the categories available? Whether you are a retail customer or you are a policy holder or you are an employee, everything is available. You need not to do anything. Only thing what you have to do, you have to select the lot. How many lots are you going to apply? One lot consists of 15 shares. So it is up to your financials how much lot you, how many lots you are going to select. You have to simply select the lot. Once you have selected the lot, you need not to give anything. Everything is automatically captured. You have to only give the mandate. Once you apply, your for lien marking means your account has to be equally protected. Suppose if you have applied for a one lot, so what is the amount of a one lot? Means you have to select the cutoff price or the price which you feel is the convenient, where the this subscription is going to be listed. So as the Shivani in its brief has addressed, that the price band is from 902 to 949. So it depends upon you what is the price you are going to select. In case, let's take an example, if you select a cutoff price, what the cutoff price means, where the share is going to be listed, whatever it is, it may be anywhere in between the 900 to 949. So the good part of this IPO is that you are going to get you are going to get the discount instantly. And I'm sorry, I think it's a price band is somewhere 904 to 949. If I said 902 to 949, so please correct me. So what is the beauty of this IPO is that you will get the discount instantly. Means that at the time of application itself, the system will take care of. You need not to do anything. You have to only select the category where you are applying. So the system will calculate the amount, and with the help of UPI, there will be a request go to your UPI application. Now you are a UCO Bank customer. So once you have put up your bid, so you submit your bid. So you have to go to your UCO Bhim UCO UPI. So Bhim UCO UPI, you have to open that application. That is a separate application. Once you log into your Bhim UCO UPI application, you have to go to My Mandate Management section. So I want to make it very clear. यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है. नॉर्मली जब हम यूपीआई का पेमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब कोई हमसे पैसे मांगता है, सपोज करिए कि हम किसी एक शॉप पे गए, वहां पे जब हम कोई सामान खरीदते हैं और हम उसे बोलते हैं कि आप हमें कलेक्ट रिक्वेस्ट भेज दीजिए, तो हम अपने यूपीआई ऐप में कलेक्ट रिक्वेस्ट में जाते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे हमें कलेक्ट में नहीं जाना है. माई मैंडेट आपको बॉटम में दिखेगा. जब आप अपनी होम स्क्रीन में जाएंगे भीम यूको यूपीआई की, उसमें आपको बॉटम साइड में दिखेगा माई मैंडेट, और माई मैंडेट में आप जा करके देखिए कि कोई आपके पास रिक्वेस्ट आई हुई है जो कि पेंडिंग है, कंप्लीटेड है, सब उसमें दिख जाएगा. आप उसे क्लिक करिए, आपकी पूरी डिटेल्स रहेगी, आपने कितने लॉट के लिए अप्लाई किया है, क्या अमाउंट है, उसे आप अपना ट्रांजेक्शन पिन दे करके अप्रूव करिए. वंस यू अप्रूव्ड इट, क्या होगा कि एक लीन मार्क हो जाएगा. द ब्यूटी ऑफ अगेन द आईपीओ इज व्हाट, आपका अमाउंट कहीं भी डिडक्ट नहीं होता है, अमाउंट आपके अकाउंट में ही रहता है. तो इससे आपको क्या फायदा होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, आपका पैसा कहीं गया भी नहीं और आपने अपने पैसे को किसी चीज में इन्वेस्ट भी कर दिया. आईपीओ की सबसे बड़ी ब्यूटी ये होती है. जहां तक जो मुझे पता चला, व्हाट आई हैव heard across, that on 12th of May it is expected that this allotment will be announced. So let's assume that on 12th it is announced that whether somebody has got the shares or not. So there are two conditions. If you get the shares, so what will happen,
नाउ द अब उसमें भी ये हो सकता है कि आपको कितने शेयर्स मिले। सपोज करिए आपने 45 शेयर्स लगाए, आपको 15 मिल सकते हैं और 45 भी मिल सकते हैं। इट इज ऑल एज Nanesh has previously explained, it all depends upon the algorithm and other things. We can say in a nutshell, it all depends on the luck factor, how many shares one is going to get. तो हम ये एज्यूम करते हैं कि सपोज किसी ने 45 शेयर्स लगाए और उसे 15 शेयर्स मिले, तो क्या होगा, जो 15 शेयर्स के इक्विवेलेंट अमाउंट है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, बाकी पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपको एक भी शेयर नहीं मिलते, तो आपके अकाउंट में जो लीन है वो लीन हट जाएगी। लीन होती क्या है? लीन में सिर्फ आप वो पैसा निकाल नहीं सकते अपने अकाउंट से, वो आपके अकाउंट में ही पैसा रहेगा, बट आप उसे निकाल नहीं सकते जब तक कि ये पीरियड खत्म नहीं हो जाता। सो जब आपको अगर शेयर मिलते भी हैं नहीं भी मिलते हैं, तो दोनों केसेस में जो भी एलिजिबल होगा वो एक्शन आपके अकाउंट पे परफॉर्म होगा और आपके अकाउंट से लीन हट जाएगा। अब इन सब की खासियत क्या है? इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप वेल्थ मैनेजमेंट में जाइए यूको बैंक के, वहां पे आईपीओ सेक्शन में जाइए अगर आपके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है तो। दूसरी चीज ये भी है कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का होना जरूरी नहीं है, डीमेट होने से भी काम चल जाएगा, मगर हमने आपको ये सुविधा दी हुई है कि इंस्टेंटली आप डीमेट और ट्रेडिंग खोल सकते हैं। वहां जाइए, सिर्फ अपना लॉट सेलेक्ट करिए और आप अप्लाई कर दीजिए। आपको पैन डालना होता है, पैन नंबर आप डालिए, लीन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो आपकी ये जर्नी रहेगी, हम हर चीज आपको डिजिटली कम्युनिकेट करते रहेंगे, आपको किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। वहां पे हमने कॉन्टेक्ट पर्सन की भी डिटेल दी हुई है, आप कॉन्टेक्ट पर्सन से भी बात कर सकते हैं। और उसके बाद जब अलॉटमेंट होगा तो जो भी आपका मतलब दायरा रहेगा कि आपको कोई शेयर्स मिले या नहीं मिले, उस केस में उतने पैसे भी कट जाएंगे और आपके अकाउंट से लीन भी हट जाएगा। सो इट्स अ फुल्ली डिजिटल एंड कन्वीनियंट जर्नी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके अलावा भी आपको कोई परेशानी होती है तो हमारे कॉल सेंटर्स, हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, इवन ऐप में भी हमने कॉन्टेक्ट नंबर्स और ईमेल आईडीज दी हुई हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्रोच अस। वी आर वर्किंग 24/7 एंड वी एश्योर यू कि हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है, क्योंकि जो यूपीआई मैंडेट मैनेजमेंट में है, यहाँ पे आपको जाकर के उसे अप्रूव करना है। प्लीज थोड़ा कलेक्ट में मत देखिएगा, कि हमारी एक आदत होती है कि हम हमेशा कलेक्ट में जाके देखते हैं, फिर हमें लगता है कि मेरी रिक्वेस्ट तो आई नहीं, कहाँ पे ये गलती हो गई। तो ये थोड़ा सा बस आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी यूपीआई के थ्रू आएगी, जब आप हमारे वेल्थ मैनेजमेंट से अप्लाई करेंगे, तो आपको मैंडेट मैनेजमेंट में जो भीम यूको यूपीआई ऐप है, उसके मैंडेट मैनेजमेंट सेक्शन में जा करके आपको रिक्वेस्ट देखनी कि आपकी रिक्वेस्ट आई है नहीं। एंड दिस इज ऑल। मतलब इससे अच्छा, इजी और कन्वीनियंट कुछ नहीं होगा। विद इन 2 मिनट्स यू कैन अप्लाई फॉर अ आईपीओ। अगर आपके पास डीमेट ट्रेडिंग नहीं है तो 1 मिनट हम और ऐड कर लेते हैं, 3 मिनट में चलिए एक और ऐड कर लेते हैं, 4 मिनट में। बस 4 मिनट में आप इस मतलब इंडिया का या वर्ल्ड के इस सबसे बड़े आईपीओ के एक भागीदार बन सकते हैं। इफ यू थिंक यू आर ईगर टू अप्लाई, you want to apply, please do come use UCO M Banking Plus mobile application. We are there to assist you and I can bet it once you use it, आप हमें भी भूल जाएंगे और आप कहेंगे कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हम इतने दिन कैसे अपने आप को दूर रख सकें। थैंक यू। बिल्कुल विमलेश जी, बहुत क्लियर और प्रिसाइज जवाब दिया आपने। सारे डाउट्स आई होप हैव बीन क्लियर्ड। अशोक परिंजा ने भी एक सवाल पूछा था, बट यू टेकन अस थ्रू दैट नेविगेशन जर्नी वेरी ब्यूटिफुली। और आपने बोला कि 2 मिनट में LIC IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूको M Banking Plus के जरिए, एंड यू कैन ऑल्सो ओपन योर डीमैट अकाउंट इन अ मैटर ऑफ 1 to 2 minutes, if you don't already have that set up as well. So Vinesh ji, very convenient and simple as you explained to us. I hope all of you will of course make that effort to analyze the IPO and also take a chance on applying for it and becoming a part of and a shareholder of this legacy company, what we call as some of the gems, or the navratnas as it was called earlier. तो नैनिश, वापस आपके पास हमने काफी चर्चा किया है अबाउट दी IPO। हमने पहले बोला भी था कि गवर्नमेंट की आशा ये था कि पहले they would sell almost 5% stake or more. They were looking at an IPO to the tune of about 60,000 crore rupees. तो अभी post the IPO and listing, can we expect LIC to divest more stake going forward in a phased and strategic manner, और stakeholders को और भी value create कर सकते हैं इसके जरिए in the long term?
या सो शिवानी, जैसे आपने बताया कि 3.5% गवर्नमेंट स्टेक दे रहा है, और फेस्ड मैनर में आगे जाके वैल्यू क्रिएशन जब होगा शेयर होल्डर्स के लिए, तब जाके वो ज़्यादा स्टेक बेचेंगे, ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे. The point that I'd like to mention here is, कि LIC on its own is a very very big organization, right? जैसे कि आप पूरे कंपनी की वैल्यूएशंस देखें तो 6 लाख करोड़ के ऊपर का तो उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगा आईपीओ प्राइस बैंड पे. तो उस पे उनका लिस्टिंग जैसे होगा, द मार्केट विल डिसाइड हाउ मच टू वैल्यू दिस कंपनी. But 6,07,000 crores is approximately how much value they will get. Now, when we talk about 6 lakh crores, right, we'll just deep dive into some numbers which tell us कि LIC कितना बड़ा organization है, और एक साथ 5% स्टेक बेचना बहुत ही बड़ी बात है. इसलिए फेस मैनर में ही गवर्नमेंट स्टेक्स बेच सकता है. जैसे कि आप देख सकते हो, LIC ने ऑलमोस्ट 37 करोड़ पॉलिसीज बेची है. आज तक उन्होंने 37 करोड़ पॉलिसीज बेची है. दैट इज a very very big number. So 37 crore lives are insured by LIC. Also, you can say that it is the largest asset management company in India. वो जो प्रीमियम्स कलेक्ट करते हैं वो प्रीमियम्स इन्वेस्ट करते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो close to 40 lakh crore rupees hai, right? That is the highest ever. And if you see the mutual fund industry, it is almost 1.1 times of the entire industry's AUM. So LIC on its own is that big, right? If you go to see कि ये जो 40 lakh crores है उसमें वो क्या होल्ड करता है, तो आप देख सकते हो कि 25% ऑफ इट गोज टू इक्विटीज. वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है. मतलब आप देख सकते हो कि 8 लाख करोड़ रुपया तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट LIC का अपने स्टॉक मार्केट्स में है. 8 लाख करोड़ रुपीस, राइट? जिसमें कि 90% कंपनीज है वो BSE NSE 200 की है. मतलब जो बड़ी टॉप 200 कंपनीज में से इन्वेस्टमेंट्स हुई है. तो आप समझ सकते हो कि एज द कंट्री डज वेल, the portfolio will automatically do well, right? The other point that I'm trying to make is it has 38% government securities, approximately 8% of corporate bonds. और ये जो corporate bonds है वो AAA rated bonds है. So you will come to know that the entire ambit where government security is, state government security is almost 25% है portfolio की. तो सब जो पैसा है वो right जगह पे लगाया है उन्होंने. वह डेट में है, इक्विटी में है, इक्विटी में भी क्वालिटी कंपनीज में पैसा लगाया है. और ये जो पैसा है जैसे ही अपनी कंट्री प्रोग्रेस करती है, ये वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी. LIC जो है बेसिकली उसका जो AUM है जो हमने बताया 40 लाख करोड़ is 16 times the AUM of the second largest insurer. So if you compare it with the second largest insurer, it is 16 times bigger. तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा पूल है. अभी ऐसे इतने बड़े जायंट को अगर डिसइन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट को फेस्ड मैनर में ही करना पड़ेगा. एक साथ मार्केट में से अगर वो पैसा उठाने जाएंगे तो उनको वैल्यूएशन नहीं मिलेगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू फेस आउट. ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर क्या है, जो ये बिजनेस का फ्यूचर क्या है, we'll have to understand that India is an extremely underpenetrated market in terms of insurance. It's said that only 3.6% of Indians are insured. Means the balance 97% of people are still to buy insurance. और जो कि maximum people है रूरल इंडिया में. और LIC की रीच जैसे मैंने आपको बताया रूरल इंडिया में बहुत ही बड़ी रीच है. सो इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि as the insurance sector progresses, this company will also progress together. और जो 3% इंश्योरेंस है, पीपल हु हैव बॉट इंश्योरेंस, उसमें भी अंडर इंश्योरेंस बहुत ही बड़ा है. जैसे एक स्टडी ने कहा था कि 83% इंश्योरेंस गैप है इंडिया में. मींस दैट अगर आपको कोई भी कैलामिटी के लिए 100 रुपए चाहिए तो अब इंडियंस के पास सिर्फ 17 रुपए है. 83 रुपीज का अंडर इंश्योरेंस है. That means that insurance as a sector
is very, very powerful and will keep getting powerful on and on. And if the sector has to do well, obviously the market leader has to follow. So this is a chance for LIC to kind of make the business grow, get equity out in public, raise money, support the government in divestment, and in a phased out manner give out stake to retail and institutions. बिल्कुल नैनिश, बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने बताए अभी, जैसे कि LIC ऑफ कोर्स इज एन इंश्योरेंस कंपनी, इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द मार्केट. इट होल्ड्स स्टॉक्स वर्थ ओवर 8 to 9 lakh crores across about 280 listed companies, big holdings in ITC, L&T, Oil India, Hindustan Copper, all big public sector companies and some privately owned companies as well. और जैसे आपने बोला that investors should view this also, क्योंकि LIC will grow along with the market. जैसे कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स में हम बढ़ावा देखें तो वैसे ही LIC शेयरहोल्डर्स को भी वैल्यू मिल सकता है. लेट्स आल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द अदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. नैनेश की अभी रिसेंटली एक RBI रेट हाइक एंड इम्पैक्ट ऑन द मार्केट सेंटिमेंट भी हुआ है, तो आगे जाके विल वी सी दिस सम सॉर्ट ऑफ अ सेंटिमेंट इम्पैक्ट ऑन द LIC IPO सब्सक्रिप्शन per se, listing in any way, or this is just sort of a news impact that comes and goes? Yeah, so as we have seen, not only the RBI, but even the Fed has done a hike recently, and across the world, we are seeing some sort of sentiment change in the markets, right? But through this issue, you're also being able to see that the rate hike has come in the midst of the LIC issue, but interestingly, it's still oversubscribed. That really shows the power of being invested in the right company. And personally, yes, when these kind of moves come, the market does have a knee-jerk reaction. जो हमने देखा मार्केट में knee-jerk reaction आ गया था, but eventually जो quality companies होती है, जो अच्छी businesses होते हैं, अच्छे cash flows वाले businesses होते हैं, वो businesses over the time they do well. So yes, there is a sentiment gap, there is a change. And that sentiment change is already seen in the markets, but I don't think it has really tampered numbers for LIC, because LIC में strength वैसी ही है जैसी की थी. Obviously with the interest rate change, they might have some change in their incomes due to the bonds that they hold. LIC also owns a lot of state government, central government and corporate bonds. तो वो बॉन्ड्स पे उनको कुछ इंटरेस्ट में गैप आ सकता है. बाकी आई थिंक ओवरऑल ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम द बिजनेस इज प्रीटी स्ट्रांग टू टेक इनटू कंसीडरेशन एनी रेट हाइक्स. बिल्कुल नैनिश, और क्लोजिंग क्वेश्चन ऑफ कोर्स सबके दिमाग में यही चल रहा है कि शुड आई अप्लाई फॉर द IPO और नॉट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड. आपने काफी चर्चा किया है इसके ऊपर कि अंडर पेनिट्रेशन है, तो द फ्यूचर ऑफ कोर्स होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रॉमिस. देयर इज ओनली 3% पेनिट्रेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया राइट नाउ. तो अगर आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा बात कर सकते हो. एंड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन IPOs, मेनी इन्वेस्टर्स आल्सो डू इट फॉर लिस्टिंग गेन्स. तो एक दूसरा सवाल भी उठता है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर मुझे अलॉटमेंट मिल भी गया और लिस्टिंग गेन्स भी मिल गई, तो शुड आई होल्ड इट or hold it for the long term or sell it after listing gains? आप इसको कैसे देखेंगे? Sure. So LIC जब listing होगी, okay, when LIC actually gets listed, it's actually going to become the 6th largest company in India. So a lot of interest in terms of holding the biggest companies in India. That's the one big thing. Also, I would like to say that if you talk about not only life, but if you talk about pension schemes that LIC has, there is a lot of scope even on that front, right? Basically 30% of people in India are above the age of 60, right? Where pension is one of their biggest incomes that they have. And a lot of this money goes to LIC, right? And, today there are approximately about 116 million people above the age of 60. But by 2050, there will be about 316 million people. That says 3 times the current number.
and all of them will definitely need pension, right? So what I'm saying is the scope of even pension or insurance or life insurance is still as strong as it was, and it's going to just keep increasing. And if that happens, you can imagine the demand for policies. You can imagine the demand of people wanting to buy insurance cover. So that really says the future of insurance industry. I mean, I'm sure the penetration will also get better. Previously, it was a challenge for people to hold demat accounts. We had only 3% demat accounts. Today, we've reached a comfortable number of about 10 crore demat accounts. So that really says that people are getting interested in capital markets. People are understanding the importance of investing in quality companies, right? In LIC, in terms of LIC, interest is seen from the figures that we're seeing of the subscription, and plus the discount that is provided to retail as well as the policy holders. So foreseeing all of that, I personally think it should be a quality to kind of build wealth through. Also, when you talk about the listing, right, listing is actually nothing but demand and supply when the stock gets listed in the secondary market. And this demand and supply is totally upon the sentiment and the market forces. However, we have seen that businesses like this, which are big and which have scope, have always done good over the long run. So insurance businesses also, we've seen a lot of private players also who have been listed, who have done phenomenally well from their listing. So LIC should follow course because it is the largest insurer with the highest market share. So keeping all of this in mind, I personally think a long-term bet would be safer and more wealth creating than just booking it as soon as it lists with some gain that you get. So a long-term horizon in IPOs always helps the investor to create wealth. Bilkul, Nanish, thanks so much for explaining that in detail. And as Nanish pointed out, all factors considered, we've spoken about the competencies, financials, risks, strengths as well. And all in all, of course, LIC could be, an IPO that holds a lot of merit for you to apply and hold for the long term. It is, of course, a public sector gem as well. So go ahead and, apply and subscribe for the IPO. We've got 2 days left. UCO Bank M-Banking Plus platform is a very simple and convenient way to do so. Closing remarks from you also, Vimlesh ji, on the kind of excitement and response that you've received. Have you also seen demat accounts now being freshly opened, especially for this LIC IPO? We've got more IPOs in the pipeline, startup companies such as logistics firms, delivery. We've got GoAir IPO coming up, all of that. So going forward, what would UCO M-Banking Plus also have to offer? So, Shivani, first of all, again, I would submit that we are working 24/7. So, it is not for the LIC especially, but yes, for the LIC, we have dedicated ourselves as it is one of the mega show of the country. So, my request to all the investors, to the customer of ours, if they want to apply, we are there. We are digitally present. You can apply at any time. When I say any time, it may be at 3 a.m. in the morning or late 11 p.m. in the night. So, it is your choice. You want to apply before your breakfast, we are there. If you want to apply after your dinner, we are there. So you can apply. But the next thing, it is not for our customers only. Suppose if someone is not having an account, they can apply for the UCO Bank account online itself. Download our UCO M Banking Plus app. There is an option for Insta account. Go to the Insta account, open an account, and then you can open all these things, Insta Demat and trading in our wealth management, and you can apply for the IPO. So we are taking care of our customers as well as we are taking care of for those segment also who are yet to come into the banking channel, especially in the UCO Bank. So my humble request is, even it rarely happens that on Sunday for any IPO banks are working. So we are there. We are 24/7, as I usually used to say, for through our digital mode. So please come, please give us a chance to serve you. Though we will be digitally, but still you give us a chance to serve you. Use our UCO M Banking Plus app and enjoy it. And even if you are having any issue there, so mechanisms are there. You will be provided an email ID, our contact center numbers. You can contact us and surely we will be there. But I can
say it, you won't require our assistance. The app itself and this whole platform is so smooth and it walks with you. मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपके इशारों पे चलेगा। मतलब आप जितनी भी आसान सी भाषा में उसे समझना चाहेंगे वो वहां पे है। हमने एक ऐसा उसे डिजाइन किया है कि हर कोई उससे अप्लाई कर सकता है, चाहे उसकी इंटेलिजेंस और आईक्यू लेवल कितनी भी हो। वो मतलब इसमें आईक्यू लेवल की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमने उसे इस तरीके से डिजाइन किया कि आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अकाउंट सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट हो जाता है। आपसे पेन पूछेगा, दैट्स ऑल। आप अपना पेन नंबर दीजिए, सिर्फ आपको लॉट सेलेक्ट करना है कि आप 1 लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि 10 लॉट के लिए करना चाहते हैं, और खत्म। तो कस्टमर्स के लिए तो है ही, और मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं एक बार फिर से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने एक मेथड अडॉप्ट किया जिससे हम आपके साथ कनेक्ट हो सकें, आपकी क्वेरीज अगर कोई है तो हम उसे सुन सकें। और बिफोर मेकिंग अ कंक्लूजन रिमार्क, आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट, जो हमने अभी तक फील किया है, क्योंकि जो पेमेंट यूपीआई के थ्रू हो रहा है और आपको मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम में ही जाना है, भीम यूको यूपीआई ऐप में। प्लीज यूको एम बैंकिंग प्लस ऐप में मत जाइए, वहां पे आपको मैंडेट मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। आप भीम यूको यूपीआई में जाइए और कलेक्ट की जगह माई मैंडेट देखिए, होम पेज में आपको दिखेगा, और वहां जाके आप उसे अप्रूव करिए। बस एक छोटी सी ये जानकारी थी जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, और इससे बेहतर कोई चैनल नहीं हो सकता जहां से हम आपके इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर ना कर सकें। तो मेरी उम्मीद है, विश्वास है, अगर आप LIC IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें सर्व करने का मौका दें, और जो कि हमारा स्लोगन है, यूको बैंक ऑलवेज ट्रस्ट इट्स कस्टमर्स, वो हम आपके सम्मान का विश्वास करते हैं, एंड वी ऑनर योर ट्रस्ट। सो माय रिक्वेस्ट इज, प्लीज do come and give us an opportunity to serve you. Thank you. बिल्कुल विमलेश जी, thank you for explaining that with clarity, and of course that Beam UCO UPI app as well. That is something that you need to go through and navigate to apply for the LIC IPO. Thank you very much, Vimlesh ji and Nanesh, for your valuable time, for taking us through all the merits of the LIC IPO, its strengths, risks, and everything involved around this blockbuster jumbo IPO, where we believe that everyone can stand a chance and consider applying for this IPO, given its performance and standing among its peers. Thank you so much once again to our audience for your time. Have a great weekend.